Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss the MCQs for chapter 13, 14 and 15. टॉपिक्स हमने जो है पढ़ लिए थे इसके, तो आज ये देखते हैं कि MCQs किस तरह के जो है पूछे जाते हैं टेस्ट में। इनका क्राइटेरिया सॉल्व करने का आप लोगों को मालूम है, उसी क्राइटेरिया के मुताबिक हमने जो है आगे चलना है। तो स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाह। Question 1 is, if the ends of a wire are connected to a battery and E will set up at ends of the wire only, every point within the wire, midpoints of the wire only, and last is at nodes only. Correct option is every point in the wire. बैटरी को के साथ जब वायर को कनेक्ट किया जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जो ई है वो सेट पूरी वायर के अंदर है, हर पॉइंट पे वायर के आसपास भी सेटअप हो जाती है वायर के अलावा। When a constant potential difference is applied across a conductor, the drift velocity of the electrons increases, decreases, remain constant or none. Correct option is remain constant, क्योंकि जब कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट है, तो उसके जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहे हैं, तो वो भी कांस्टेंट ही रहेगी। The device which can convert heat energy into electrical energy is thermistor, thermometer, thermostat या thermocouple. Correct option is option D, that is thermocouple. Thermocouple is a device that converts heat into electrical energy. Question 4 is, when two spherical conducting balls at different potentials are joined by metallic wire, current starts decreasing from 0 to maximum, decreasing from maximum to 0, increasing from 0 to maximum, increasing from maximum to 0. दो बॉल जब मेटालिक बॉल्स कंडक्टिंग बॉल्स हैं आपस में कांटेक्ट में आती हैं, तो जो पोटेंशियल है वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए हाई से लो पोटेंशियल पे जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, यानी डिक्रीजिंग फ्रॉम मैक्सिमम टू जीरो, वो आपस में एक दूसरे को कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे। द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ द करंट इज एम्पियर, ओम, कूलम या वोल्ट। Correct option is option A, that is ampere. Question 6 is, the strength of the magnetic field, yani B, at a certain points around a wire depends upon value of current passing, distance from the current element, color of the material, and both A and B. Correct option is option D, that is both A and B, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ वायर के आसपास जो है वो डिपेंड करती है कि जो करंट है वो कितना पास कर रहा है उस वायर में से, और जो डिस्टेंस है करंट एलिमेंट से वो कितना ज़्यादा है मैग्नेटिक फील्ड का, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस के साथ साथ कम होती जाती है। Question 7 is, if the resistance of the conductor is increased, then current will increase, remain same, decrease, first increase, then decrease. Correct option is option C, that will decrease, क्योंकि ओम्स लॉ के मुताबिक V equals I R, जब रेजिस्टेंस बढ़ती है तो करंट ऑटोमेटिकली
कम हो जाएगा, यानी प्रोडक्ट को अपने जो आई आर है प्रोडक्ट को कांस्टेंट रखने के लिए एक चीज बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली दूसरी चीज जो है वो कम हो जाएगी। Question 8 is the resistance of a conductor depends upon conductor's nature, dimension, physical state, all of them. Correct option is all of them. कंडक्टर जो कंडक्टर है उसकी रेजिस्टेंस डिपेंड करती है कि जो मटेरियल है वो उसकी नेचर क्या है, उसकी डायमेंशन क्या है और उसकी फिजिकल स्टेट जो है वो क्या है। Question 9 is a sample of a conductor is said to obey Ohm's law if graph between V and I is straight line, curve, parabola, both A and B. Correct option is option A, that is straight line. Question 10. Example of non-ohmic devices, your device is filament bulb, current carrying wire, semiconductor diode, या both A and B. Correct option is option D, that is both A and B. Next, question 11, the resistivity of a material of the wire depends upon length of wire, resistance of wire, area of cross section, या material of wire. Correct option is option D, that is material of wire. Resistance can be measured in volt per ampere, ampere per volt, joule per coulomb, ampere per joule. Correct option is option A, that is volt per ampere. Temperature coefficient of the resistance is change in resistance per degree centigrade, fractional change in R, yani resistance per degree centigrade, change in resistance per Kelvin, fractional change in resistance per Kelvin. Correct option is option D, that is fractional change in resistance per Kelvin. Question 14 is negative temperature coefficient of resistance means that R increases with increase in temperature, R decrease with increase in temperature, or increase with the decrease in temperature. Option D is both B and C. Correct option is option D, that is both B and C, यानी टेम्परेचर को रेजिस्टेंस को इंक्रीज करो और टेम्परेचर डिक्रीज किया जाए तब, और जब रेजिस्टेंस डिक्रीज की जाए और टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए तो जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव होगा। ओमिक सेंटीमीटर यानी ओम सेंटीमीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टेंस। करेक्ट ऑप्शन इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी जो रेजिस्टिविटी है उसका यूनिट ओमिक सेंटीमीटर होता है। क्वेश्चन 16 इज फिजिकल स्टेट इन द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ मींस टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर, लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, प्रेशर ऑन अ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। Correct option is option A, that is temperature of a conductor. Question 17 is if 2V are needed to cause a current of 0.2 ampere to flow in a conductor, its resistance is
0.1 ohm, 0.4 ohm, 1 ohm, 10 ohm. Correct option is option D. V equals IR. इस फार्मूले के से आप जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं. I की वैल्यू गिवन है, V की वैल्यू गिवन है, R इजीली निकल आएगा. Question 18 is heat is produced in a conductor due to flow current because atoms are attracted towards each other. Kinetic energy of the atoms increases. Atoms are repelled from each other. Potential energy of the atom increases. Option B is correct. Kinetic energy of the atom increases क्योंकि heat जब दी जाती है तो kinetic energy atoms की increase कर जाती है. Question 19 is in the region surrounding a current carrying wire, magnetic field is set up. Direction of lines of force depends on the direction of current. The lines of forces are parallel, both A and B. Option D is correct, both A and B. Question 20. It is customary to represent current flowing towards the reader by a symbol. यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनको अगर आउट ऑफ द पेज यानी कि रीडर की तरफ आ रही हैं तो किस सिंबल से शो किया जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट. आउट ऑफ द पेज डॉट से शो किया जाता है एंड इनवर्ड द पेज जो है वो क्रॉस से शो किया जाता है. Question 21 is magnetic field is a vector quantity, scalar quantity, both A and B, or neither A and B. Question option A is correct. It is a vector quantity. The direction of magnetic lines of force around a current carrying wire is given by Faraday law, head to tail rule, right hand rule, both A and B. ऑप्शन सी यानी राइट हैंड रूल के मुताबिक आप जो है इजीली डायरेक्शन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की मालूम कर सकते हैं राइट हैंड रूल के मदद से. मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैन नॉट इंटरसेक्ट एट ऑल, intersect at neutral points, intersect with in magnet, and none. Option A is correct. Magnetic lines of forces कभी भी intersect नहीं करती. If A is a vector area and B is a magnetic field, then flux will be B dot A dot B, A cross B, both A and B. Option D is correct. That is both A and B. Vector area is vector whose direction, vector है whose direction is along the surface element at angle 60 degree to the surface element perpendicular to the surface element depends on the direction of B. Correct option is perpendicular to the surface element. Vector area जो है वो surface के area के perpendicular होता है यानी normal में. Question 26 is magnetic induction is also called as magnetic flux, magnetic flux strength, magnetic flux density, both A and B. Correct option is D, that is magnetic flux and magnetic flux strength. Question 27 is Tesla can also be written as
न्यूटन एम्पियर पर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, पर एम्पियर पर न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। टेस्ला का यूनिट जो है वो, इसको वेबर भी कहा जाता है। सॉरी, टेस्ला ये न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन 28 इज मैग्नेटिक फ्लक्स passing through an element of an area A placed perpendicular to the uniform magnetic field is maximum, minimum, zero, या none। ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी अगर परपेंडिकुलर होगा तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो मैक्सिमम होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स passing an element whose vector area makes 0 degree with the magnetic force. Options are B A cos theta, 0, B A या none। Correct option is option C, that is B A। 0 डिग्री सेंटीग्रेड 0 डिग्री है तो जो मैक्सिमम फ्लक्स होगा वो 0 पे आएगा, बी ए। जो क्वेश्चन 28 है, इसमें जो एरिया लिया गया है वो सरफेस एरिया है, ना कि जो है क्या कहते हैं वेक्टर एरिया। वेक्टर एरिया अगर परपेंडिकुलर प्लेस कर दिया जाए तो वेक्टर एरिया जो है वो पैरेलल टू दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 30 इज मैग्नेटिक फोर्स डज वर्क, डज नॉट वर्क, डिफ्लेक्टिंग फोर्स, बोथ बी एंड सी। ऑप्शन डी इज करेक्ट, डज नॉट वर्क। मैग्नेटिक फोर्स जो है वो जस्ट डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, कोई काम नहीं करती। तो दोनों ऑप्शन जो है वो ठीक है। Question 31 is when an electron is projected in a direction perpendicular to the lines of magnetic force, its path becomes a circle, straight line, parabola, projectile. Option A is correct. Question 32. An induced current can be produced by constant magnetic field, changing magnetic field, moves across magnetic field, both A and B. Option B is correct. Faraday law के मुताबिक changing magnetic field can induce current. Question 33 is the induced current in a conductor depends on resistance of a loop, speed with which conductor moves, both A and B. Option D is none. Option C is correct, that is both A and B। यानी रेजिस्टेंस ऑफ लूप पे भी डिपेंड करता है कि लूप की रेजिस्टेंस कितनी है जिसमें से करंट जो है वो इंड्यूस हुआ है जिसमें, और स्पीड विद विच कंडक्टर मूव, किस स्पीड के साथ जो कंडक्टर मूव कर रहा है जो इंड्यूस इंडक्शन की वजह बन रहा है। क्वेश्चन 31 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड्स अपॉन rate of decrease of magnetic field, rate of increase of magnetic flux, rate of change of magnetic field, constancy of magnetic field. Correct option is option C, that is rate of change of magnetic field। जिस rate के साथ जो है change हो रहा है उससे के उतना ही magnitude है induced EMF का produce होगा। A coil of constant area is placed in a constant magnetic field. An induced current is produced in a coil when coil is distorted, coil is rotated, coil is stationary, both A and B। डिस्टॉर्टेड का मतलब टेढ़ा करना या मूव कराना।
ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी जब कॉइल को रोटेट किया जाएगा और डिस्टॉर्ट किया जाएगा तभी जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंड्यूस करंट जो है वो करंट इंड्यूस होगा। क्वेश्चन 36, the unit of induced EMF is volt, Newton meter per ampere per second, joule per coulomb, yeah, all of these. Option D D is correct, that is unit जो है EMF का इंड्यूस का वो वोल्ट भी है, न्यूटन मीटर एम्पियर पर सेकंड भी है, पर एम्पियर पर सेकंड और जूल पर कूलम भी है। Question 37, electromagnetic induction depends upon number of coils, changing magnetic field, both A and B and none. Correct option is option C, both A and B, changing magnetic field or number of coils पे depend करते हैं electromagnetic induction. Question 38 is a 10-watt bulb operating for 100 watts would use how much energy? Kilowatt hour, watt hour, megawatt hour या none? Kilowatt hour. Option A is correct. Electric power is a product of potential difference and current, potential product of square of current and resistance, potential difference and resistance, both A and B. Option D is correct. That is potential difference and current and product of square of current and resistance. Question 40. The minus sign in Faraday law indicates the direction of induced current that favors the change in flux, EMF that opposes the change in flux, EMF that opposes the electromagnetic induction, and current that opposes the change in flux. Correct option is option B. Question 41 is Faraday law of electromagnetic induction has been used in the construction of galvanometer, voltmeter, electric motor, electric generator. Correct option is option D. ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है उसको बनाने के लिए किया गया था। ऑप्शन यहाँ से गलत हो गया। ऑप्शन डी इज करेक्ट। द माइनस साइन इन Faraday law deals with the direction of induced current, is explained by Lenz's law, is explained by Faraday law himself, both A and B. Option D is correct. Deals with the direction of induced current and explained by Lenz's law. माइनस साइन को explain किया था Lenz's law. The Lenz's law refer to source voltage, induced EMF, induced current, none of these. Lenz's law ने सिर्फ माइनस का बताया था, तो इसमें से कोई ऑप्शन जो है वो माइनस को नहीं बताता, तो none of these. AC generator is a device used to convert energy from mechanical to electrical, chemical to electrical, electrical to mechanical, heat to electrical. Option A is correct. Mechanical energy से electrical energy में convert करता है AC generator. When a coil is rotated in a magnetic field by some mechanical means, then magnetic flux through coil changes, rotation becomes fast, and EMF is induced in the coil, both A and C.
Correct option is option D, both A and C, yani magnetic flux through coil changes and EMF is induced in the coil. Question 46 is carbon brushes used in the AC generator remains stationary, move along coil, provide current path from coil to external circuits, both A and C. Option D is correct. Transformer is a device used to increase current, increase or decrease voltage, decrease current, या none. Option B is correct. Increase और decrease the voltage. Transformer जो है वो voltage को increase या decrease करने के लिए use किया जाता है secondary और primary voltage coils के जरिए से. On the basis of voltage, transformers are of dash types 2, 3, 5 and 6. वोल्टेज की बेस पे ट्रांसफार्मर की दो टाइप्स हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. Step down transformer is used to get lower output voltage, lower current value, higher output voltage, higher current value. Option A is correct. Lower आउटपुट वोल्टेज. स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो हमारे घरों में भी ट्रांसफार्मर जो लाइट देते हैं इलेक्ट्रिसिटी, वो भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं क्योंकि जो ग्रिड होता है वहां से हाई वोल्टेज आ रही होती है, यहाँ पे 220 वोल्टेज में वो कन्वर्ट करने के लिए जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है. लास्ट क्वेश्चन इज आयरन स्ट्रिप्स इन द ट्रांसफार्मर आर insulated connected directly, both are correct or none. ऑप्शन ए इज करेक्ट. आई थिंक आप लोगों को एमसीक्यू से आइडिया हो गया होगा. ये एमसीक्यूज भी इम्पोर्टेंट है और आइडिया हो गया होगा कि किस तरह के एमसीक्यूज हैं वो पूछे जा सकते हैं इन टेस्ट में. तो आज के लिए इतना ही. ओके, थैंक यू जी. अल्लाह हाफिज.